And I have with me my co-host Mr. Faisal. How are you doing, sir? एक मिनट मैं पहले इंट्रोड्यूस करूंगा. ये बंदा जो है खाली प्रैक्टिस बाबर आजम के पीछे, बाबर आजम के सामने, शाहीन के पीछे, शाहीन के साइड में पूरा क्रिकेट देख लिया ना 2-3 दिन से जो प्रैक्टिस चल रही है. और कल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला है, मगर उससे पहले हाउ हैज बीन योर एक्सपीरियंस एट द वर्ल्ड कप, सर? एक्सपीरियंस जबरदस्त था मेरा. नहीं मतलब अब क्या बोल सकते हैं, एक्सपीरियंस तो वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी टाइप सिचुएशंस थे. बहुत मजा आया. जो लोगों को आप टीवी पे देखते हैं, एंड ऑब्वियसली ओवर द इयर्स काफी टाइम से पाकिस्तान नहीं आए एंड वी weren't able to see them, बट ऑब्वियसली अगर मैं फर्स्ट टाइम के एक्सपीरियंस से हिसाब से बात करूं, लुकिंग एट द प्लेयर्स सामने से अलग फीलिंग है. लाइक शाहीन आपके सामने है, एंड देन बाबर आपके सामने, रिजवान भाई आपके सामने. इट वाज एन गुड फीलिंग. काफी कुछ सीखने मिला कि भाई कैसा इतना बैटिंग करते हैं, कितनी मेहनत लगती. बोलने को तो भाई अपन MS धोनी की मूवी देख लेते, मूवी देख अपन भी क्रिकेटर बन सकते थे बोलता हूँ मैं हमेशा बोलता हूँ भाई मैं तो क्रिकेटर बन सकता हूँ, लेकिन या मौका आना था अभी. बट नहीं, इट वाज अ वेरी गुड फीलिंग एंड काफी कुछ सीखने को मिला कि भाई हाउ मच ट्रेनिंग, डेडिकेशन बहुत ज्यादा यार. इट्स लाइक अ वेरी हार्ड जॉब, डे इन एंड डे आउट इतनी बैटिंग करना, नए नए इनोवेटिव शॉट्स खेलने को सीखना, नए नए बॉलर. 150 क्लिक्स का बॉलर हारिस रऊफ को भी देखा, शाहीन को भी देखा, फिर गुड स्पिनर लाइक शादाब को भी देखे. तो इट वाज अ वेरी वेरी गुड फील. और आप पहली बार शादाब के बारे में बात करें, आप पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे, पूरा माहौल था प्रॉपर विद ऑल द अदर जर्नलिस्ट, तो वो कैसा फीलिंग था? हाउ वाज दैट सिटिंग एंड एक्सपीरियंसिंग योर फर्स्ट इंटरनेशनल क्रिकेट प्रेस कॉन्फ्रेंस? जबरदस्त. Again, like Shadab was very down to earth, humble guy है, and he made everyone actually feel very. मैं तो नया था, मेरे को और comfortable feel कराया गया था. Like the way he was interacting, and like माइक अगर नहीं चला था तो भाई वैसे ही पूछ दो. And before it started, पहले clearly जो representative थे ICC के, उन्होंने बोलते कि don't ask any personal question or anything. But like कुछ भी पूछ लो भाई, आप लोग छोड़ेंगे थोड़ी. Like वो अच्छा एक moment था. And then again, it's just what you see in on TV and stuff, and you're getting to experience that. भाई next level feeling था. ऐसा लग रहा था कि भाई अपन भी अब बन रहे हैं कुछ धीरे धीरे, and obviously जितने भी लोग जुड़ रहे हैं उनका प्यार है, मुस्तफा भाई की बदौलत है, मोक्स भाई की बदौलत है. तो I mean, alhamdulillah, it was very good to see. No, great. And हम लोग भी enjoy करें आपका जो भी reactions थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के and practice का, seeing the players up close and from your eyes, just giving us a story and telling us how you felt, तो हम भी enjoy करें वो. Now we're almost 2-3 days away from the World Cup. तो आज हम लोग बात करेंगे. अब देखो वार्म अप मैचेस भी चल रहे हैं. आज साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड का था. My boy Quinton de Kock, robbed off a victory because Duckworth Lewis आ गया बीच में, and hopefully the rain stays away in this World Cup. लेकिन अभी ये बारिश इफेक्ट कर रहा है गेम्स को. अब इंडिया इंग्लैंड भी देख लो, ये भी आज का भी मैच देख लो, बारिश का प्रॉब्लम हो रहा है हमारे साथ यहाँ. भाई मैं वही बोल रहा था, वार्म अप से ज्यादा कूल डाउन हो गया ये, बिकॉज त्रिवेंद्रम एंड पूरा तिरुवनंतपुरम, पूरा तो बोलने नहीं आता मेरे को, त्रिवेंद्रम एंड गुवाहाटी, ये दो जगहों से ऑब्वियसली मालूम था कि भाई थोड़ा बहुत साइक्लोनिक आ रहा है, एंड लॉट ऑफ रेन दैट्स कमिंग टुवर्ड्स दैट. इंडिया का भी मैच वॉश आउट हो गया था, तो in a way अच्छा ही था भाई इंडिया फॉर मी, because I want to see India England directly. I don't want to see anything prequel, so that you don't know what's coming. I mean, वो दिन excitement hold करके रख दिया था for 27th. Obviously that will get to there, but warm up matches हैं. Obviously I think पूरे जो भी players हैं, जितने भी weren't in the rhythm of cricket, they're getting back into the rhythm of cricket rather than like they're not playing full throttle. But फिर भी कुछ आपको glimpses मिले कि हाँ भाई like Kane Williamson के लिए अच्छा हो गया. I think he managed to get a 50 today, also 35 walked out. जैसा बोले South Africa के players को, they've been again they're getting a lot of experience. थोड़े बहुत injuries है, but you can see that this team is also hungry. अच्छा खासा they perform, but then again New Zealand managed to take away the match towards the end. और मैं एक चीज नोटिस करूं warm up matches में, बैटिंग विकेट्स है अभी फिलहाल. I think that's because start of the season, start of the World Cup, pitches fresh है, तो आप देख सकते हैं 300-350 रन बना रहे हैं. और परसों न्यूजीलैंड चेस भी कर दी थी यहाँ पे पाकिस्तान के खिलाफ, तो लुकिंग लाइक गुड बैटिंग पिचेस इनिशियली, सो वी माइट get to see high scores early on in the tournament. Then after that maybe as the pitches slow down, then the spinners will come into it, फिर आपके off cutters और ये जो slower balls ये ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे. मगर right now it looks like good batting pitches. हाँ भी, तो जैसे आप बोले it looks flat. even हैदराबाद पे जो पाकिस्तान न्यूजीलैंड का वार्म अप हुआ था वहाँ पे काफी, and again like अब 350 है वो मार रहे, 320 मार रहे, but it looks like chasing और easy हो जा रही है. like people are easily chasing. और आया था मेरे को T20 का आदत ज्यादा हो गई in the recent past कि भाई T20 देखते देखते हमें लग रहा है कि भाई ये 400-500 तो मार सकते थे अगर 50 ओवर में, the way it's going.
बट अगेन जैसा आप बोले जस्ट बिल्कुल फ्लैटर विकेट से एंड ऑब्वियसली उससे ज्यादा उम्मीद मेरे को शुभमन गिल से है और ये रोहित शर्मा इन लोगों से ज्यादा उम्मीद हो रही है उससे बिकॉज दे विल प्रॉब्ली टेक द वर्ल्ड कप बाय 2 hands 3 hands maybe and it's positive for India obviously we're much of better as a batting unit at this point of time तो वो तो देखा जाएगा but yeah flatter wickets है fresher wickets है towards the like going into the tournament maybe you will see a few you know bouncy wickets maybe up towards धर्मशाला ये वो you might get to see movement over there you might get to see क्या बोलते you know the likes of again batting तो रहेगी but bowlers obviously जो innovate करेंगे जब full throttle डालेंगे it might be a difference when you compare them to the warm up matches. Yeah, no, 100%. And आप इंडिया के बारे में बात करें तो if you talk about India, अब ऑस्ट्रेलिया से पहले मैच है कल वार्म अप गेम है नेदरलैंड्स के खिलाफ तो we might get to see a few tricks here and there. You know, we might see विराट कोहली बैट, we might see रोहित शर्मा बैट. लेकिन मेरे को ये पूछना है आप कौन सा कॉम्बिनेशन दिख रहा है? I won't ask you predicted 11 right now because there's still time to that match. लेकिन अगर आप कॉम्बिनेशन के हिसाब से would you go with 3 spinners or would you go 2 spinners and 3 fast bowlers excluding Hardik Pandya? How would you look at it against Australia in Chennai? Against Australia and Chennai. See, Chennai again, we've lost there this year in the beginning of Dekho. We lost against them. I think, I mean, the wicket is slower, so I'd go with spinners, like what we've seen in the IPL. Yeah. But slower wicket, so I would probably go with more spinning options than fast bowling options. And Hardik Pandya does fill in that gap. तो वी हैव अ मोर बैलेंस अगर स्पिनर्स को ऐड कर दिया तो इज व्हाट आई फील पर्सनली. मेरे को ऐसा लग रहा है बिकॉज़ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रहे चेन्नई में हिस्ट्री है ट्रेंड का तो और अश्विन का होम ग्राउंड भी है ही माइट जस्ट बी योर थर्ड स्पिनर हार्दिक पांड्या योर थर्ड फास्ट बॉलर मगर फिर पाकिस्तान के खिलाफ दे विल गो बैक टू रिवर्ट टू टू स्पिनर्स मेरे हिसाब से एंड देन गेट द फास्ट क्विक्स इन. But again, Ahmedabad we know is more of a flatter wicket as well. So maybe it might come कि हाँ भाई या तो शार्दुल ही रहेगा या तो you know one who can bat वो option जरूर देखा जाएगा. But again I think they'll जैसा आप बोले but in Chennai I feel turning wicket है थोड़ी बहुत slower wicket है and like you said अश्विन भाई का home ground है तो वो चीज हो सकती है. वो चीज हो सकती है. And let's talk about our 11s for the World Cup. You know आप लोग भी जो भी जुड़े आप कमेंट्स में देखो सबके अलग अलग ओपिनियंस है तो सब रिस्पेक्ट करेंगे. मेरी टीम बहुत गालियां देंगे आप लोग मगर आपकी टीम भी भेजो बिकॉज हम सबको फिट नहीं कर सकते. So when you आप एक बार just for their understanding मेरी भी understanding to है when we are saying World 11 best World Cup 11 means ये साल के प्लेयर्स जितने भी हैं वो स्टैक करें not are we including also the previous. नहीं ये साल में मेरे हिसाब से जो टीम अच्छी रहेंगी मैं उस तो 2023 की वर्ल्ड कप बेस्ट जितने भी अभी तक कमिंग इनटू द टूर्नामेंट से अभी तो टूर्नामेंट शुरू नहीं हुआ प्रॉपर्ली बट जितने भी क्या बोल सकते हैं आने वाले दिनों में हम लोगों को लोग दिखने वाले उसमें से हम छांट पीट के कट पेस्ट करके हम लोग एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट्स करके देन विल डिसाइड कि भाई ये टीम फिटिंग है बेस्ट वर्ल्ड कप 11 के लिए या नहीं तो वील कम टू नो दैट. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द ओपनर्स ऑब्वियसली. तो माय कैंडिडेट फॉर द फर्स्ट ओपनिंग वुड प्रॉब्ली बी शुभमन गिल. Is where I'm going. Yeah, but he is going to kill it this World Cup. He's going to be in my actual squad as well. जो हम लोग कल मैं मुस्तफा भाई एंड हमारे जो सेलिब्रिटी हैं यहाँ पे एक रिपोर्टर कल आप शंटो को डालने वाले थे ओपनिंग में. मैं देखिए भाई शंटो का भी है भाई एंगल अब अभी 1 down 2 down पे नहीं आया अपन but I'm just going to go with प्रणव शुभमन गिल my first pick. सो ओके आप 11 बोल तो आपका या मैं आप तो 11 तैयार कर लो. मेरा 11 तैयार है. क्विंटन डिकॉक जॉनी ब्रेस्टो ये मेरे दो ओपनर्स है. 1 डाउन विराट कोहली. नंबर 2 डाउन द ग्रेटेस्ट बैट्समैन दिस ईयर द वर्ल्ड क्लास प्लेयर दिस क्लास इन हिज नेम एंड्रे क्लासन एट 2 डाउन. मैक्सवेल 3 डाउन. फिर मैं जॉस बटलर एट 6, राशिद खान एट 7, शाहीन शाह अफरीदी एट 8, मार्क वुड एट 9, स्टार्क एट 10, कुलदीप यादव एट 11. आप कोई सवाल है मेरे टीम को लेकर? मैं कोई एक बार देख लेता हूं मैं भी क्विंटन डिकॉक जॉनी बेस्टो तो मैं जाऊंगा शुभमन गिल के साथ बिकॉज ऑब्वियसली मेरे उम्मीद बहुत ज्यादा शुभमन गिल से जुड़ी हुई है. फ्लैट ट्रैक बुली के ज्यादा भी वन ऑफ द नो बट ही इज रियली इंप्रूव्ड हिज गेम रन गेटर एंड आजकल रिसेंटली मैं आप देखो थोड़ा बहुत मूवमेंट ही इज एडजस्टिंग टू डिफरेंट कंडीशंस. आई मीन नॉट टू एन एक्सटेंट कि भाई बॉल इतना सीम नहीं सही है. एशिया कप में बांग्लादेश के खिलाफ जो 100 मारा था दैट वाज अ टफ पिच. ही बैटेड रियली वेल सो इट्स अ गुड शॉट. I'm going to probably go for another opener. I mean, मेरा you know biasm तो रोहित शर्मा को खींच रहा है because obviously I have expected, but I'm not going to do completely India or completely one-sided. So I'm going to go Shubman Gill. Then I'm going to go with who? ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड कौन बच गया? I'll go Devon Conway. Devon Conway की बैटिंग I mean आज भी अच्छा खेला and he's also a wicket keeping option, so a lot of people might not know that. I mean they might know that obviously, but like again अपन जॉस बटलर को देखेंगे, अपन हेनरिक क्लासन को देखेंगे, but मेरे हिसाब से I think Devon Conway, Shubman Gill हो गया. Number 3 तो we're all fixated. There's only one guy who's going to fit the bill there, विराट कोहली. उसको तो it'll be a similar kind of situation. Number 4 मेरा देखिए it might be कौन है ऑस्ट्रेलिया का number 4 स्टीव स्मिथ. Smith, so I will go for Smith because of his
you know, his contribution in India, Yeah. the way he has performed in India throughout the years. So I'll go with Steve Smith. Number 5, I'll need an all-rounder there. So number 5, maybe I will go with, who did you go with number 5? आप गए हैं Glenn Maxwell के साथ. Maxwell, very good shout. Yeah. Again, injury की डर होती है उनसे कभी-कभी टूर्नामेंट के. थोड़ा स्पिन भी डाल देता है, थोड़ा नहीं बहुत तो स्पिन डाल देता, that adds balance to your team. So I'm going to all-rounder का देगा मोइन अली देख लूंगा मैं. I think was a good Moeen Ali is shout. going to be a good shout over there in the middle. Moeen Ali hit a 50 today also, Moeen match Ali hit winning a against 50, Bangladesh, winning by 4 wickets England. And he knows his pitches like the back of his और hand. फिर because इंग्लैंड का उसने ये IPL देखो, लोग गैम्बल के साथ खेलने वाले, हाई रिस्क क्रिकेट. आज ऑलमोस्ट हार सकते थे बांग्लादेश के खिलाफ भी. सो दिस इज हाउ दे गोइंग टू प्ले. दे गोना टेक अ लॉट ऑफ रिस्क. तो उन लोग या तो वर्ल्ड कप उठा देंगे, नहीं तो they'll get knocked out at any time. Don't be surprised with England. Anything can happen with this team. Yeah, but the way England has been performing, भाई वो एक चीज है कि भाई this team has batting till number 8, number 9. Like Wood है, David Willey है, Reece Topley है, ये लोग भी बैटिंग कर लेते हैं. तो that is one thing that England has an advantage. Sam Curran है, Sam Curran was probably one of the best all-rounders there. So मेरे हिसाब से इंग्लैंड को तो मैं फाइनल्स में, अगेन we'll come to that conversation when it happens. तो मेरे हिसाब से तो मैं किस बोला अभी तक, शुभमन गिल बोला, डेविन कॉर्नवे बोला, विराट कोहली बोला, and then I went to मोइन अली. Now number 5 would be somewhere like a wicket. I'll probably take a Rizwan there. I want to see Mohammad Rizwan because मैंने नेट्स में भी उनको देखे, and a few matches ago also he performed brilliantly against Sri Lanka. जो उन्होंने नॉक मारी थी. But there's something with Rizwan, whenever he performs the team loses. I don't know what it is, whether it's strike rate. आप देखो like वो मैच में भी एशिया कप में श्रीलंका के खिलाफ, दोनों एशिया कप फाइनल लास्ट ईयर और ये एशिया कप में he batted really well, मगर हार गए उन लोग. आज भी अगर परसों का जो न्यूजीलैंड का मैच है, he batted pretty well, हार गए. I don't know what it is. His run rate is always less than the team chasing. I don't know what it is. मैं जिस तरीके से देख रहा हूँ, 2 back-to-back setbacks हो गए उसके साथ, एक्सपीरियंस गेन कर लिया होगा. मे बी गोइंग इनटू दिस कंपटीशन he'll have a different mindset. Okay. मिस्टेक जो हुए हैं पास्ट में, अगर आप स्टैट्स की वजह से देख रहे हो तो it is a good shot. He's getting stats wise नहीं, also he has ability to accelerate in the middle. एकदम से like what we saw, एकदम से किराक हो गया. चाचू भी साथ में, इफ्तिखार भाई भी साथ में थे उनके, तो वो भी देखे थे हमने कि दोनों की पार्टनरशिप काफी अच्छी जमी थी. एंड अगेन विकेट कीपिंग ऑप्शन भी है, तो इट हेल्प. ऑब्वियसली डेविन कॉनवे वुड प्रोबब्ली कैन फील्ड एनीवेयर. सो वो हिसाब से देखा, रिजवान आ गया मेरे पास. उसके बाद आपने डाला है बटलर एंड राशिद खान. सो मैंने कहते हो 5 हो गए राइट अभी. हाँ, तो अब छठा प्लेयर मेरा होगा कौन? छठा प्लेयर कौन होगा? मोक्ष, कोई प्लेयर है आपके माइंड में? Number 1, Dale Steyn. Number 1, Dale Steyn. Going rolling back the years, but something that Pakistan also, something that South Africa is also doing. Number 6 पे any recommendation that you can give me? You can go Hardik Pandya. You can go not proven for me enough. Not proven. Not enough. The Sam Curran option है, Hardik Pandya option है, Marcus Stoinis option है आपके लिए. न्यूजीलैंड में जिमी नीशम है. नहीं, वो तो बहुत बुरे फॉर्म में यार. नीशम को तो but it's just because you're looking for a medium pace all rounder, right? At that time you could go with him. फिर श्रीलंका में शनाका है. तो ऐसे हैं, आप pick कर सकते हैं. I think I'll go with what's his name? What did you say before? I think Sam Curran also a good shout. Yeah, वो Sam Curran के साथ भी जा सकता हूँ मैं. I'll go with Sam Curran over there. For me, and then Kuldeep Bhai will walk into my team because Kuldeep Bhai is right now the best leg spinner that is available. उसके बाद अपना हो गया, I'll go. I mean, I would have picked Naseem. मेरे लिए Naseem would fit in any team right now, but because of his injury काफी sideline हो गया और अच्छा नहीं दिख रहा यार. उसके बाद I wanted to see him, so I had the luxury to see him in full throttle. But फास्ट बॉलिंग ऑप्शन का वुड हो गया. वुड तो डेफिनेटली है मेरे पास. मोहम्मद सिराज और बुमराह के बीच में थोड़ा कंफ्यूज हूँ. आई एम सेइंग सिराज और बुमराह. आई वुड प्रोबब्ली से मोहम्मद सिराज बिकॉज़ भाई अपने बच्चा है, अपने घर का बच्चा है, तो ऑब्वियसली सिराज भाई तो इसी के रिप्रेजेंट. आई एम गोना गो विद मोहम्मद सिराज. हाउ मच डू आई हैव लेफ्ट नाउ? आई थिंक वन मोर प्लेयर होगा, तो आई एम थिंकिंग या तो शाहीन या तो स्टार्क. स्टार्क का रिकॉर्ड बेटर है. एंड या so I'll go with Mitchell Stark. I think I'll go with Mitchell Stark. But Naseem is my bowler from Pakistan, so I don't want to like वो नहीं करना चाह रहा मैं. तो कौन हो गया मेरा? शुभमन गिल हो गया मेरे पास. हो गया शुभमन गिल हो गया मेरे पास. डेविन कॉनवे हो गया. विराट कोहली हो गया. एंड उसके बाद रिजवान हो गया. मोइन अली हो गया. सैम करन हो गया. कुलदीप यादव हो गया. एंड स्टार्क, वुड, सिराज. What a busy day chasing the target. Morning team number 12. Road number 12 is it's like very close by. Yeah, it's very good. Just थोड़े comments ले लेते मुस्तफा. फैजान बेग भाई बोले, साम भाई क्या हाल है आपका? मन लाहौर से हूँ, आप पाकिस्तान कब आ रहे हो? इंशाल्लाह देखिए कभी भी टाइम मिला तो ट्राई, या तो आप दुबई आ जाइए. चैंपियंस ट्रॉफी
Champions Trophy Ibrahim 2025. Bhai is in the house. Ibrahim Bhai अपने long live Ibrahim Bhai. He's back in the chat with us. Sorry थोड़ा ये चले आते comments तो वापस लाना पड़ रहा है. He's saying कि माशाल्लाह इधर मस्जिद में पाकिस्तानी अंकल चेसिंग द टारगेट की वीडियो बहुत थैंक यू सो मच भाई. और अंकल्स क्या आंटीज को बच्चों को सबको बताओ यार जितने भी है प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए. फिर गिल बेस्टो कोहली क्लासन. हाँ और क्या गिल अपनी टीम दे रहे थे इब्राहिम भाई. हाँ गिल बेस्टो कोहली क्लासन मिलर या इफी भाई स्टोक्स राशिद कुलदीप शाहीन सिराज वुड. दैट्स अ गुड शाउट. आई थिंक स्टोक्स का यही है. मेरे लिए उन्हें वर्ल्ड क्लास प्लेयर है. ही इज द बेस्ट मोस्ट क्लच प्लेयर इन द वर्ल्ड. लेकिन ही इज नॉट गोइंग टू बोल फेस्ट. वो थोड़ा सा फर्क पड़ेगा इंग्लैंड के लिए. एंड in general, maybe like we're not going to see him as an all-rounder, just as a batter. Stokes in general, he can win matches with either bat and ball, even in the field. We've seen that will affect him a bit as well, I think, because now all the pressure will be on batting. All-rounder अगर आप हैं, आपको ये रहता है कि भाई अगर मैं बैट से परफॉर्म नहीं करा, बॉल के साथ परफॉर्म करूंगा, बॉल से नहीं करा तो फील्ड में करूंगा. लेकिन अगर आप एक कार्ड दिए, just and especially this guy has been the best all-rounder in the world for so long, and you're taking one thing out from him, then it might affect him a bit, I think. Yeah, 100%. Ibrahim Bhai, Pakistan bowling attack looking weak when they are depending a lot on Shaheen and Haris too. And exactly that's the thing. जब हम लोग शादाब भाई से बात कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, he said the same thing कि we're not even looking at conditions and stuff, we're just looking fitness सही हो जाना, बच्चे ठीक ठाक हो जाना बॉस. क्योंकि एशिया कप में आप देख लो दैट इज वेयर दे लॉस्ट द टूर्नामेंट फॉर मी. मोरल फेल लीप्स एंड माइल्स जब हारिस रऊफ इंजर हो गया, ओब्लिक इंजरी हो गया, फिर नसीम जब गिर गया था. मैं एक चीज मेरे को दिख रही है, उन लोग 20 ओवर का जो गेम खेलते हैं वहां पे जो फुल थ्रॉटल 4 ओवर डालते हैं कंपेयर टू 10 ओवर्स, थोड़ा फर्क पड़ रहा. इवन विद शाहीन अफरीदी, आई मीन ही इज अ हाई क्वालिटी बॉलर. मैं लाइव भी देखा उसको, आप भी देखे नेट्स में, लाइक ही इज आउटस्टैंडिंग. लेकिन अगर आप देखें वो 10 ओवर जो कंटिन्यूअस डालना पड़ता है या 50 ओवर के मैच में, वो थोड़ा सा इट्स इफेक्टिंग देम अ बिट. एशिया कप में भी देखे हम लोग. तो यही बोलते ना कि अबाउट शाहीन के भाई शाहीन न्यू बॉल के साथ ही इज अ लिटिल बिट venomous, थोड़ा डेंजरस है विद द न्यू बॉल. बट मिडिल ओवर्स में जब आते हैं आप शाहीन का रिकॉर्ड इट्स नॉट दैट गुड. बट देन अगेन टुवर्ड्स द एंड ही मैनेज्ड टू क्लीन आउट द टेल एंड स्टफ. मेरे हिसाब से शाहीन बिगिनिंग में देयर इज नो वन मोर डेंजरस देन हिम. नसीम इज मोर कंसिस्टेंट थ्रू आउट. दैट्स व्हाई माय थिंग गोस टू नसीम के भाई नसीम इज द मेन वन. एंड हारिस इज जस्ट लाके पटकना. What I've noticed is he just comes, but again at Patakna is consistently 150. Yeah. So that is where the difference that Haris Rauf, and he was looking the most pumped up in the nets. जब मैं उनको देख रहा था, वाह वो पुकार ले रहा था, like Bowser, he was like Bowser, कि श्रद्धा कर ले आदमी थे उन्होंने. उनका प्रॉब्लम क्या हो रहा है मालूम? वो थर्ड सीमर में जूनियर और हसन अली दोनों they're not looking threatening and they're giving away a lot of runs. मेरे हिसाब से लाइन एंड लेंथ कंसिस्टेंसी नहीं दिख रही मेरे को. उन लोग ये दो बॉलर्स वसीम जूनियर, इवन एशिया कप मैच जो श्रीलंका के खिलाफ था वहां पे भी he was very wayward. I was surprised कि जमान खान को नहीं लिया because he was the most impressive bowler. Like आप आके नसीम को जो उन्हें रिप्लेस करा वो गेम में ऑलमोस्ट पाकिस्तान को जिता दिया आउट ऑफ नोवेयर. तो आप उसको नहीं लेके गए, मेरे को थोड़ा सा वो दिख रहा था इफी. बिकॉज हसन अली गेटिंग हिम आउट ऑफ वन लाइक 4 साल के बाद लेके आ रहे, इज लाइक द अंडरटेकर, राइजिंग फ्रॉम द डेड. आई डोंट नो कि किस हिसाब से क्या उसको देख के लेके आए. जो अच्छा अभी परफॉर्म करा उसको तो ले लेना था. वसीम जूनियर का असली बंदा इमर्जिंग कप में भी खेले हो तो he was a little bit towards the team. And yeah, I mean I know, but then Hasan Ali Khan जो PSL में डाले थे डेथ बॉलिंग ब्रिलियंट, बट अगेन वो T20 था. सो आई थिंक मगर अभी आप देखो एशिया कप में, अभी भी एशिया कप में जो उसको प्रेशर में लाके वो वन मैच जो फाइनल खेला, जो भी क्या बोलते क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल जो भी था वो सेमीफाइनल था. मेरे हिसाब से इट वाज अ वेरी गुड शाउट. अगेन आई डोंट नो पीसीबी की थॉट प्रोसेस कैसे रहती है, इट्स डिफरेंट. आई मीन दे प्रोबब्ली उन लोग बोले कि एक्सपीरियंस प्लेयर होना था, वर्ल्ड कप जो खेला पहले, ये वो प्रेशर जो हैंडल कर सकता है. इंडिया में जमान है यहाँ पे, जमान इज इन इंडिया, वी सॉ हिम bowl as well. He's there in India as so well. He's a net bowler, huh? He's a net bowler. I think he's in the reserves if I'm not sure, but I think he's in the reserves as well. So he did bowl here as well. And वही है ना कि भाई that's where शादाब की पॉइंट आती है कि भाई फिटनेस अगर कोई भी इंजर, we need a backup immediately. So I think इसलिए जमान को रखा है. धानी ये लोग तो सब एशियन गेम्स गए हुए हैं चाइना. सो आई थिंक दैट्स व्हाई आई थिंक जमान को भी लाया गया है. एंड या आई थिंक थर्ड सीमर फॉर पाकिस्तान बहुत बड़ी गिच्ची है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वहां पे. एंड आई सी इट, द लॉस ऑफ नसीम, यू कैन सी इट इन द बॉलिंग अटैक इटसेल्फ, लाइक दैट यूनिटी ट्रिनिटी जो भी बोला आप, हारिस रऊफ शाहीन एंड नसीम, वो गैप क्लियरली आपको दिख रहा है. एक बार ये कमेंट पढ़ते हैं जो एकदम खत के से आया है मुस्तफा भाई. सो जस्ट गिव मी 1 सेकंड. उससे पहले आई थिंक पीयूष भाई आज की ओपनिंग सेरेमनी कब होगा? मेरे हिसाब से इट्स ऑन थर्सडे 4th को होने वाली है ओपनिंग सेरेमनी. यस, द थर्ड सीमर एंड स्पिनर्स आर बीइंग यूज्ड एज अ डिफेंसिव bowling option as Bauer spreads the field the minute he brings the spinners and doesn't give them slips. So yeah, I think Ibrahim bhai ki observation is taken for, obviously he knows
A lot of the Asia Cup game as well as tomorrow. Ritu leading first time. Let's get that goal. Yep, let's try and get the goal. We are waiting from Toli Chogi. Waiting for Mogi from Toli Chogi. Mogi from Toli Chogi. Mogi is just getting his costume ready. Kurta pajama. He's getting it ready. Send it to a tailor, and yeah, we get him immediately on point. But Mustafa, who are you actually looking or roaring for? कि भाई ये वर्ल्ड कप में without a doubt that you have कि perform करेगा बैटिंग और बॉलर एक बैटर एक बॉलर हेनरी क्लासन बैटर मैं बोल रहा हूँ मेरा और एक नाम था बट आई फॉरगॉट अबाउट हेनरी क्लासन आई वुड हैव गॉन क्विंटन डिकॉक yeah I would have gone Quinton but I'm going Henrik Klassen and bowler wise there is plenty of options again it will depend on fitness for me it's between Wood and Bumrah so I'll probably go that's Mark a very Wood. good और जो भी आप लोग जोड़े भाई अपना भी अपने टीम्स दो कमेंट करो भाई कि आप लोगों को क्या लगता है कि what's gonna be happening first Bavuma is winning the World Cup Bavuma भाई Tampa Bavuma समझ रहे हैं Tampa Bavuma has hidden his talent till the World Cup मगर उसको देखो भाई उन्हें बहुत प्यारा अच्छा प्लेयर है भाई और कैप्टन भी अच्छा है वो नेदरलैंड से हार के थोड़ा सा वो प्रॉब्लम हो गया लास्ट टाइम बट साउथ अफ्रीका अगेन इट्स ऑल मेंटालिटी दिस चोकिंग थिंग नीड्स टू गो मैन कितने बार कितने साल देख रहे हैं हम लोग 20 साल से तो देख रहे कि दे कीप चोकिंग अगेन आई लाइक द वे द साउथ अफ्रीकन टीम इज सेट अप ठीक है नोकिया नहीं है लेकिन आप देखो बैटिंग क्या तगड़ी है क्विंटन डिकॉक ऊपर मार्को यानसन कैसा खेल रहा है नीचे आके आप मिडिल में हेनरी क्लासन है मार्करम है आपका वैन डू से दे आर गुड बैटर्स बवुमा हिमसेल्फ इज अ वेरी गुड बैटर मार्करम अगर कंसिस्टेंसी पकड़ लिया ना जो तरीके से उन्हें खेल रहा था जस्ट बिफोर द आईपीएल इफ ही स्टार्ट्स बैटिंग लाइक दैट साउथ अफ्रीका एक्चुअली हैव वेरी भाई बॉलिंग में क्या है रबाडा थोड़ा बहुत इनकंसिस्टेंट रहा है आई एग्री आईपीएल में भी पिट चुका है थोड़ा बहुत तो समझ गए हैं ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी ऑस्ट्रेलिया में पिटा था बट यू नेवर नो दिस गाय इज एन एक्सपीरियंस्ड गाय ही कैन कम बैक स्ट्रांग विद द बॉल और कौन है उनके पास तबरेज शमसी है महाराज तो नहीं है महाराज भी है हाँ और एक जेरल्ड कोइट्सी उन्हें भी है तो आई थिंक दे हैव गॉट अ डिसेंट टीम आई वुडंट पर्सनली से कि विनिंग नहीं देख सक रहा हूं मैं साउथ अफ्रीका को impactful रहेंगे probably dark horses बोल सकते हैं आप साउथ अफ्रीका एंड श्रीलंका आर गोइंग टू बी माय डॉग बिकॉज़ श्रीलंका आल्सो यस आप लोग हंसेंगे भाई ये क्या बोल रहा है एशिया कप में तो लग गए इन लोगों के 56 सिराज भाई लग दिए उन लोगों को बट श्रीलंका ऐसे ऑपरेशन है थ्रू द रैंक्स आप देख लो आईसीसी इवेंट्स में दे हैव बीन फिनोमिनल कहीं ना कहीं से ना फाइनल में घुस जाते कहीं ना कहीं से डरा देते एंड जब जिस तरीके का कैप्टन शनाका है आई थिंक ही इज अ वेरी गुड लीडर वो लोगों को लेके चलता है एंड नाउ दे हैव गॉट लहीरो कुमारा बैक दे हैव गॉट सम ऑफ देयर ओल्ड बॉल बैक कुशाल परेरा फुल टूर्नामेंट खेलेंगे कुशाल मेंडिस धनंजय सिल्वा तो श्रीलंका मेरे हिसाब से आप थोड़ा बहुत वेरी और डोंट completely cut them off against similar conditions. Also, the team that we always take lightly every single ICC tournament. I think New Zealand will make it to the semi-finals. I won't have them in my top four because I want to make it more fun and exciting. Lekin they will make it. The way these guys are like well-oiled machines. Kane Williamson is a mastermind when it comes to captaincy. He will miss the first game, lekin he's coming back. अब ये मैच में 50 last game में भी पाकिस्तान के खिलाफ he scored a 50 as well. He's a class player. The way he rallies his troops. Chapman is coming out, man. The way he's looking really good. Latham आज मारा Tom Latham is also a very good batsman. Yeah, and पाकिस्तान के खिलाफ they didn't really use their bowlers. Bolt और सदी तो नहीं है शायद. Bolt तो bowling नहीं करा. Ferguson 37-38 ओवर में आया तो like they didn't use the full bowlers. उन लोग Glenn Phillips को दला रहे थे इसको कौन है रचिन रविंद्र बैट्समैन बन गया भाई उसमें I get confused with him Rachin Ravindra and Ravindra Jadeja like his name is like mixed man but he is a really good player too very good he's a lower order batter test में शायद opening मैं देख चुका हूँ उसको Daryl Mitchell है फिर बीच में Mitchell is this guy is a player to watch out for this World Cup Daryl Mitchell high class आज भी उन्हें जो छक्के उड़ाया था end में against South Africa high class batter this guy and he's in really good form too so watch out for New Zealand man देखते हैं भाईजान क्या बोल रहे हैं शोएब भाई यस सर टेल सुलेमान भाई वो शोएब भाई हाँ प्लीज पाकिस्तान प्लेइंग 11 फॉर टुमारो पाकिस्तान प्लेइंग 11 फॉर टुमारो अभी बोले व्हाट डू यू थिंक विल बी द हाईएस्ट स्कोर पोस्टेड दिस वर्ल्ड कप आई थिंक 417 आई थिंक ओह दैट्स लाइक अ वेरी एक नो देखो इन्हें मेरे हिसाब से इनिशियली इट्स गोना बी हाई स्कोरिंग देन इट्स गोना बी लो स्कोरिंग देन यू विल सी 250 माइट बी डिफिकल्ट टू चेस 260 270 माइट बी डिफिकल्ट टू चेस एज वेल आई थिंक दैट इनिशियली विल सी हाई स्कोर्स उसमें से इंग्लैंड अगर अगर पेल दिए तो एक दो गेम में तो मित्रा भाई ने सही बात है इट्स सो सैड देयर इज नो मैच इन इंडियन मैच इन हैदराबाद भाई वी आर आल्सो वेरी अपसेट कि देयर इज नो I tell you something which is sadder than that yes there's no game overall in Mohali
That is like that's like iconic that's place iconic यार. ground. वहाँ battles वहाँ पे two Last good time होते हैं. semi-final Shout out था. to my boy Ashish in the comments. Mohali Yeah, city represent. look, Hyderabad at least they have games, Yeah. right? Yes, they don't have an India game, but look, Oh. India is playing in 9 venues. Oh. One venue misses out, it's Hyderabad. Unfortunate, ठीक है. हाँ. But at least we have World Cup here. यहाँ पे मोहाली आप तो नॉर्मल मैचेस भी नहीं दे रहे हैं यार. यार मोहाली को मैच पूरे धर्मशाला जा रहे हैं मैचेस. पंजाब के भी आधा वहां शिफ्ट कर दे रहे हैं. तो आई डोंट नो लाइक व्हाट द सिचुएशन इज, लेकिन दैट्स अ ग्राउंड दैट वी उड़ता पंजाब था, उड़ाई दिए पंजाब. एंड यू नो पंजाबी फैंस माहौल जो बनता है वहां पे इनक्रेडिबल. पूरा कनाडा भी विल बी यू नो इफ इट वाज या दे वुड बी ऑल यूनाइटेड एंड एक्साइटेड. सो आई थिंक इंडिया लाइक मोहाली इज अ ग्राउंड दैट आई विल मिस इन दिस वर्ल्ड कप 100%. एंड द विकेट अ लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम द ऑर्डिनरी लाइक यूजुअल विकेट्स आप जो इंडिया में देखते थोड़े bouncy surfaces. South Africa, Australia would have enjoyed playing there a lot. Yeah. So वो भी है. Bahuma will join tomorrow बोल रहे हैं. Yeah, Bahuma will join the team tomorrow as he will come back. He's on his way back to India. Pakistan from Asia Cup contenders to World Cup में कुदरत का निज़ाम. What a media hyped team. देखो भाई, Pakistan is also one of those teams that you never know about what they're going to do. We never thought they're going to win that T20 World Cup. They won it. They never thought that they're going to come in the 2022 T20 final. They did. देखो भाई, I get. And then 2019 में भी decent performance थी, but Pakistan again you can't keep them out. I mean मैं जो देखा हूँ from the nets and observation, I was telling बोलता भाई same thing that there's definitely कि भाई एक gap दिख रहा है from what they were looking at the beginning of this year because they had their whole team with Naseem and everybody. Certain injuries morale down करती है, but again आप अगर इन लोगों के batsmen चल गए, अगर इफी भाई चल गए बीच में, एंड अगर शाहीन चल गया, हारिस चल गया, भाई फिर क्या ही करोगे आप. लाइक दे कैन एंड दे हैव द पोटेंशियल टू दैट, यू कांट डिनाई दैट. बट अगेन हाँ, अभी अगर आप इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया के टक्कर में ले रहे हो तो मे बी थोड़ा आई वुड मे बी कॉल पाकिस्तान लिटिल बिट लेसर, बट आई कांट काउंट देम आउट. अब जैसे लोग जिम्बाब्वे से हारते एक दिन, फिर जाके साउथ अफ्रीका को मारते, देयर इज दैट काइंड ऑफ टीम. आप 2019 के बारे में बात करें, देखिए 5th एट दैट टाइम, उसमें भी अगर आप नोटिस करो पहले मैच में वेस्ट इंडीज स्मैश्ड देम. आई थिंक 100 ऑल आउट हो गए थे पाकिस्तान. एंड देन व्हाट डिड दे डू नेक्स्ट गेम? दे वेंट एंड हिट 350 अगेंस्ट इंग्लैंड, राइट? तो यू नो यू आर गेटिंग ऑल आउट अगेंस्ट वेस्ट इंडीज फॉर 100 रन्स एंड देन यू आर हिटिंग 350 अगेंस्ट इंग्लैंड. सो इज दैट काइंड ऑफ टीम वी डोंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम देम. कैसे भी आया था. या एंड यू नो पाकिस्तान इज डेंजरस व्हेन यू से दैट भाई इन लोगों में कुछ भी दम नहीं है, उन लोग आके परफॉर्म कर लेते हैं. सो वी डोंट नो खाना खा के दम ला लेकर आते थे. So it's inconsistent. Even if they don't make, if they come 7th also, I won't be surprised. It's just unpredictable. बिल्कुल. एक सवाल है, what will be the playing 11 Pakistan? I think you might see a little changes. ज्यादा चेंज नहीं होंगे. जो कल तो 15 खेलेंगे. हाँ, कल तो पूरे खेलेंगे. And I think वही शाहीन नहीं डाला था लास्ट मैच में, तो वो डाल देगा. हारिस रॉ bowled what 3 or 4 overs, so he'll try bowling a bit more. It probably might be a little bit much more like towards game focus क्योंकि नेदरलैंड्स का 6 को है और कल है 3rd, तो 3 दिन रहेगा. I mean एक आध दिन ही प्रैक्टिस होगी. You can't expect them probably to do back to back. आज सरप्राइज प्रैक्टिस हो गई थी भाई. आज you know हम थे वहाँ पे, like एकदम से उठे तो बाबर भाई आगे you know स्टेडियम का रीनू कहाँ से आ गया. He came to practice short ball and stuff. Short ball, like off spin. लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिन ज्यादा फोकस कर रहे. बैक फुट पे भी थोड़े बहुत ड्रिल्स हुए थे. एंड यू नो एवरीवन केम टू प्रैक्टिस. हाँ, आई थिंक उसमें से जो हमें मालूम है, आई थिंक हारिस भाई बैटिंग भी करे, बॉलिंग भी करे. इट वाज वसीम जूनियर हु डिडंट डू एनीथिंग एट ऑल. आई थिंक ही वाज रेस्टेड कंप्लीटली. एंड वही है कि they were practicing more on the back foot, more on the like spinning, trying to sweep का भी option you know check करे कि भाई कैसा चलने वाला है. So I think they have understood game plan. ये है कि भाई short balls focus करो और इंडिया में turning wickets है क्योंकि उन लोगों के मैचेस हैं, चेन्नई में उनके मैचेस भी हैं, like बैंगलोर में छोटे ग्राउंड में भी है. तो I think they're focusing towards their venues and वहां से ले रहे. So it was good back to back भाई. प्रैक्टिस इतना सीरियस ले रहे, सोच ला वर्ल्ड कप होना. हाँ, और इंडिया के बारे में कल उनका का भी मैच है नेदरलैंड्स के अगेंस्ट. तो is there anything you want to see in particular? I want to see them win every match. warm up रहने दो, cool down रहने दो, actual match रहने दो. इंडिया भाई ऐसी घुसना ये टूर्नामेंट में भाई के डरना सामने वाला, बस ये टीम से डरना. You know what I mean? कि बुमराह विकेटा ले रहा, सिराज किराक फॉर्म में है, विराट कोहली 100 मारा, रोहित शर्मा फुल थ्रॉटल भाई. मे बी यू माइट नॉट सी द होल टीम प्ले. आई डोंट नो विराट कोहली का सिचुएशन क्या था. we know that he didn't travel with the team to Trivandrum, but अब देखना पड़ेगा कि भाई उनका क्या सिचुएशन है. बट केएल राहुल है. आई नो मेरे को केएल राहुल से ज्यादा वो नहीं है, बट भाई आज सब अब खेल ले भाई. पहले नहीं खेला, अब खेलो. शुभमन गिल से तो मेरी उम्मीद जुड़ी हुई है because that guy on these wickets. So I want India ऐसा इमेज बना लेना भाई वर्ल्ड कप में घुसने से पहले कि भाई डरना ऑपोजिशन. यू लेट इट बी इंग्लैंड आल्सो डरना, बट इंग्लैंड अलग ही है भाई वो तो. आई थिंक इंडिया को एक ही प्रॉब्लम रहेगा, इट विल बी अगेंस्ट न्यूजीलैंड. दैट वाज गोइंग टू बी देयर बिगेस्ट.
Against South Africa, if it's in Wankhede semi-final, जब थोड़ा सा हो सकता है because South Africa की batting, like They chasing will be yeah. good and stuff, but still you back India against South Africa. But South Africa did defeat India in the last T20 World Cup. अगर आप देखें वहाँ पे bowling South Africa की अच्छी थी on point. So any team can beat anyone in this World Cup, but India in particular, I think if there's one team. Sorry. No, I was just saying if there's one team, it will be New Zealand. The only thing that I want to see is that who's going to bat, who's going to play Iyer or Ishan Kishan. I don't know. I just have a feeling that they might go with Shreyas Iyer against Australia, even though Ishan Kishan had played the majority of the matches in the Asia Cup. I think you'll understand the complexion from the warm-up game as well कि भाई किसको खिलाने वाले तो बड़ा समझ में आ जाएगा. मैं ये बोल रहा था कि इवन द बॉटम टियर टीम्स आप जो देखो नेदरलैंड्स है, अफगानिस्तान है, ये लोग बांग्लादेश है, यू कांट एक्चुअली टेक बांग्लादेश आल्सो नाउ कंपेटिटिव साइड. लाइक उनका तंजीद हसन जो ओपनर है काफी अच्छा है. शंटो का बारे में बात कर रहा था मैं. शंटो इज आल्सो वेरी गुड बैट्समैन. रिसेंटली काफी 2-3 हंड्रेड्स मारे उन्होंने बैक टू बैक. उसके बाद शाकिब भाई तो लेजेंड है यार. ही नोस हाउ टू टेक हिज टीम इनटू सिचुएशन लाइक वी वर डिस्कसिंग यस्टरडे. थर्ड हाईएस्ट थे लास्ट वर्ल्ड कप में वो. उसके बाद उनके पास तस्कीन अहमद अच्छा फास्ट बॉलर है, मेहदी हसन मिराज. तो ये टीम भी अच्छी बिल्ड हो रही है. देन अगेंस्ट श्रीलंका, बॉटम टियर टीम्स अफगानिस्तान, एनीवन विल. मेरे को लग रहा है ऐसे वर्ल्ड कप में कोई अपसेट तो होने वाला है, लाइक मेजर अपसेट दिखने वाला है. आई जस्ट होप इंडिया से नहीं होगा. या वर्ल्ड कप्स में तो होते हैं अपसेट्स. लास्ट टाइम इंडिया में जब वर्ल्ड कप होता आयरलैंड हरा दी थी इंग्लैंड को. तो कुछ ना कुछ तो हो सकता है. लाइक ये तो दिस इज पार्ट ऑफ क्रिकेट. यू विल सी मे बी अपसेट हियर एंड देयर. And yeah, I mean, you guys जुड़े रहो हमारे साथ. There will be a lot of exciting content. Fans will go cover tomorrow the game Pakistan versus Australia. That will be a good warm-up match, and then we will have the Indian content from the first game against Australia. We'll have that game in Chennai. We'll cover all the India games and all the World Cup games as much as we can. Yeah, studio se, field se, reel se, shorts se, we'll go. Yeah, we'll have real shorts and everything. So आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ. जुड़ते रहिए, कमेंट्स डालते रहिए. आप लोगों को क्या टाइप ऑफ कंटेंट चाहिए, हम वो टाइप से भी आइडिएट करेंगे. जो आप लोगों को पसंद है वो लाके भी देंगे, जो हमें थोड़ा बहुत समझ में आता है वो भी लाके देंगे. बट ओवरऑल वी जस्ट वांट टू एंजॉय दिस वर्ल्ड कप. वी वांट टू गो रोल बैक द ईयर्स. वी वांट एवरीवन टू गेट इनटू द रिदम ऑफ वर्ल्ड कप. आजकल काफी लोग 50 ओवर ये वो इट शुडंट गो आउट ऑफ स्टाइल. Watch the matches, watch the games, enjoy the World Cup. India is going to hopefully win the World Cup, but there's strong competition in England, strong competition in Australia, and again this is all छोटे जो टीम्स अपन समझ रहे, किसी को छोटा मत समझो. बिकॉज एवरीबडी थ्रू दिस ईयर कहीं ना कोई बायलैटरल में कहीं ना कहीं से कुछ विक्ट्री ले लेके आई है. तो ऐसा जो बिल्डअप है ये वर्ल्ड कप का, अगेन अफगानिस्तान इज नॉट अ बैड टीम, श्रीलंका नॉट अ बैड टीम, बांग्लादेश नॉट अ बैड टीम. So we can't count anyone out really. Top running 4 for you into the semi-final. I think India, I'll keep them in the top 4 because not only they're playing at home, I think 50 over is their most comfortable format. Test से भी ज़्यादा और T20 से ज़्यादा India is most comfortable in 50 overs and they're doing well as well. I'll put them in the top 4. Whether they win the World Cup, I'm not sure. I don't think it's going to be that easy as we're expecting. It'll be a bit challenging. Then I have England in my top 4. South Africa is my third team, and then it's between New Zealand, Pakistan, Australia. Look, I think New Zealand might be your number 4, but I'm going to go with Pakistan. I would love to see India-Pakistan match, Eden Garden semi-final. I don't think we can beat that. I think that, like, if you ask me India-Pakistan, Ahmedabad, India-Pakistan, Eden Gardens, what is the best? Like, what more than do you want? You are having India-Pakistan playing one new ground which is huge and then a historic iconic ground. So then that'll be cool to have, but don't count out New Zealand. I don't have Australia as in my top 4 at all. I don't know why. I think I understand why, because no, it's a risk. I think they're a good team. They're a very good team. काफी बच्चे उधर से नए भी हैं थोड़ा बहुत, मगर तगड़ी टीम तो है यार. लाइक वार्नर का फॉर्म वापस आ रहा है. उसके बाद मैक्सवेल है बीच में आपके पास, स्टोइनिस है आपके पास, आपका लाबुचगने है, स्टीव स्मिथ है, वेरी गुड. और अब स्टार्क बिग गेम प्लेयर मैन, बिग मैच, या वर्ल्ड कप परफॉर्मर, या ही इज आउटस्टैंडिंग इन द वर्ल्ड कप मैन. द कैप्टन वेरी हैंडी विद द बैट नाउ. They've got batting depth. They've got Adam Zampa. And Stark, we haven't seen him in India, like, in the IPL for a while, right? So let's see how he bowls. Pat Cummins, I don't know, in Indian conditions with the white ball, he hasn't been as effective. Lekin you can't count these players out. They have some high. Zampa to world class spinner hai. Bhai, वही है ना, Australia is again a team who's won most of the world, right? So you can't ever count them out. आपके top 4 में कौन है? मेरे top 4 में India नहीं, मजाक कर रहा हूँ. I would say India, England, ये दो तो मेरे, I don't know why, दिल में दिख रहा कि this might even like turn out to be a final. India, England, I will go not South Africa. I'm going to go Sri Lanka, very out of the box. Okay, Sri Lanka, because ये team को कहीं ना कहीं से घुस जाती, and Pakistan. We're going to go more Asian teams. Very Asian, very more like
because they look like they have something to prove here. The only I understand where you're coming from. The only counter I have is that these players जो है South Africa, New Zealand, England, now they're more used to Indian conditions. It's not like 10 साल पहले जब you know कुछ भी नहीं था, like not 20 साल ले लो, 96 World Cup ले लो, 2000 that era in the 2000s where they used to come and struggle in India. It's not like that because they play in the IPL, they understand the conditions, they understand different cities as well, pitches कैसे है. अब जैसा David Warner Hyderabad है, for him it's like उन्हें आज से बिरयानी खा रहा था. आज तो इन्हें भाई वो दालियां खाएगी, यो दालियां. Yeah, he said as soon as he came, the first thing he posted कि भाई this is what I'm eating, biryani. Like you know, I ordered it. I saw burgers and stuff around it, but he was eating biryani. So he knows the Hyderabad ground inside out. You have you know all the other players, England के Butler, in log Stokes, they all play IPL. So that's the only thing. Will Sri Lanka and Afghanistan be able to match that level? Because it's you say conditions, but now these players also understand these conditions too. बिल्कुल, because they play IPL, they have more friendships here with Virat और AB की देखते हैं. I do understand. But वही है कि भाई for me, I'm probably maybe पाकिस्तान में थोड़ा इफ्यू में, more like Australia, England, India, Sri Lanka. For me, because I just feel Sri Lanka कहीं ना कहीं से निकल के आ रही, like a New Zealand, and this is probably like a subcontinent New Zealand for me, Sri Lanka. So वो हिसाब से वो रहो, and जिस तरह के लिए एशिया कप में उनकी थोड़ी बहुत you know वो हो गई, तो they might just come with extra more you know फायर इन देयर बेली कि भाई नहीं हमें तो प्रूव करना है कि भाई ये कप हम लेके जाएंगे ट्राई करके. एंड लास्ट टाइम फाइनल भी इंडिया में हारे थे वो लोग. हाँ इंडिया में, मगर वो मेरा यही अलग था, वो लेवल अलग. ये हसरंगा भी नहीं है उन लोगों के पास, थोड़े इंजरीज भी चल रहे. वो लेवल आगे क्या करेगा वो देखना. हाँ yeah, they do, but like Sri Lanka is a team that in general you know don't count them out. Afghanistan, I always say every World Cup in the last 2-3 years, like T20 run to 50 over, I always like to watch Afghanistan, man. I really enjoy. ये World Cup be one of the more reasons to watch it. काफी legends यहाँ से निकलने वाले हैं. World Cup रोहित शर्मा है, you know मोहम्मद नबी है. It might be the last World Cup. Last World Cup for them. So David you have Warner. to see it for like one last time. Maybe Virat Kohli also. I mean, it's like fit तो है भाई probably एक और खेल लेंगे भाई. लेकिन जीत के तो maybe शायद it's a good way to end your career. So lots of people like maybe you know इफी भाई का भी last है. You know, so yeah, it's gonna be interesting. Throughout the World Cup भाई ग्राउंड के अतराफ में, ग्राउंड के अंदर से, ग्राउंड के बाहर से, ग्राउंड के साइड से, घर के पीछे, घर के आगे, घर के इधर, मोहल्ले के साथ, सबके साथ हम लोग का कंटेंट रहेगा. यू नो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जहाँ से भी आप यू नो आप मेरे को हम लोग को चेसिंग द टारगेट इंस्टाग्राम पे, चेसिंग द टारगेट ट्विटर पे, चेसिंग द टारगेट यूट्यूब पे, खबरों में जिधर भी आप कमेंट करना चाह रहे हैं हम लोग यू नो जवाब देंगे, शॉर्ट्स बनाएंगे, रील्स बनाएंगे, आपका कंटेंट जो आपको देखना है वो बताइए. एंड मुस्तफा भाई भी का खुद का इंस्टाग्राम ट्विटर है, आप उसके भी आप फॉलो करिए, शेयर करिए एंड लाइक करिए. एंड मुस्तफा भाई अब खत्म करने के टूवर्ड्स जाते हैं. कल हमें जाना है वार्म अप मैचेस देखने ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान का, तो उधर से मैं लाइव दूंगा रिएक्शन. मुस्तफा भाई स्टूडियो से रिएक्शन देंगे. मोक्स भाई हमारे मुस्तफा भाई जो दूसरे हैं, मुस्तफा स्क्वायर जो बोलते हैं हम लोग, उन लोगों की पार्टनरशिप रहेंगी स्टूडियो में. And we will get you the latest content. So yeah, Mustafa, like, are you happy with your best 11? Yeah, I think my team is the next level, best team. I'm looking forward to this World Cup. Like every World Cup, India में यार मजा ही आने वाला है. Yeah, India में cultures भी अलग रहेंगे, you know, खाना भी अलग मिलेगा हर city में, so everything will be different. And the when India is playing, the atmosphere is going to be off the roof. That I can guarantee you. When like I'm sure other matches too, but जब India खेल रही हर stadium में, because it's in different venues. If it's even Netherlands, India and Chinnaswamy is going to be full. Every ground is going to be full. If India make it to the semi-finals, it's going to be really loud. You will hear it from like your house. Imagine yeah, it's going to be crazy. Yeah, again that 14th October. Yeah, 14th October to remember. Yeah, and that is going to be a historic day because it's going to be in the Ahmedabad Narendra Modi Stadium. What is that? 1.2? Yeah, 1.2 lakh, right? 1.2, yeah. Yeah, 1.2 lakh capacity. That's incredible, man. So I'm looking forward to it and very excited. We're all going to be giving you hopefully the latest content. Faiz has been working his butt off in the last few days and he'll continue. I mean, gym में बोल रहा है squats वगैरह. No, even in the ground को जा रहे इधर जा रहे उधर जा रहे, तो आप लोग को कुछ नहीं, क्रिकेट के लिए, आप लोगों के लिए, मुस्तफा के लिए, और हम लोग भाई भी सेम करेंगे. Yeah. Work our bones finger to the bone. Yeah, we love the cricket. And आप लोग जो भी सवाल है कमेंट से, आपके भी opinions हम लोग जानना चाहते हैं. भाई कुछ भी आप बोलना चाह रहे भाई बोलो, आपका चैनल है, आप लोगों के लिए है. एंड ये सभी इजाजत लेंगे मुस्तफा भाई और मैं. एंड कल live from the stadium, Pakistan Australia warm up game. Enjoy the World Cup, enjoy, and yeah, let's keep this one for the memories hopefully. Yes, thank you guys. Good night.